Now let us go for the next question of the same type. डायग्राम देख के क्या समझ में आया? डरे नहीं तो समझ में क्या आया? करेक्ट. डायग्राम देख के ये समझ में आया कि there are 4 forces and all the 4 forces are passing through one single point. That means it is a concurrent force system. And because it is concurrent force system, I have only 2 formulas with me. That is R is equal to root of what? Summation of Fx square plus summation of fy square. And similarly, I have for theta is equal to tan inverse of summation fy by summation of fx. Okay, so let us first see the question then. What is the question? हाँ, बस इतना ही है. Find the resultant of given force system. That's it. इतना ही question है. Find the resultant of given force system. So let us find that. बेचारे ने बोला तो करके देना पड़ेगा. Okay. So first of all, tell me how many forces are there? 4 forces. 4 forces. उसमें से सीधे कितने और किसको कितने को सीधा करना है? चारों को सीधा करना है. यार चारों के चारों टेढ़े हैं. टाइम लगेगा. चलो ठीक है, लेकिन सुधार देंगे. अपन है अपने पास लॉजिक, टॉनिक है अपने पास, कर लेंगे. क्या टॉनिक है अपने पास उनको सीधा करने का? Resolution of force is the medicine to make them straight. Okay. So what is that medicine? Let us apply. Chalo. So what we will do? One line parallel to x, one line parallel to y. I am going for the first force. ठीक है. Direction. Force कहाँ जा रहा है? Up and right. Correct. ऊपर और राइट में. Yes. So one of the component will be going towards right side. One of the component will be going towards up side. Now the angle. यहाँ पर हमको एंगल दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 30. तो यहाँ पर भी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 60. बराबर 30 होगा. 30 होगा ना कि 60 होगा? 30 है ना सर? 30 होगा. मैं देख रहा था तुम लोग जाग रहे हो कि नहीं. ठीक है. सो इफ दिस इज 30, दिस इज आल्सो विल बी 30. सो इफ दिस इज द कंपोनेंट व्हिच इज एडजेसेंट टू द एंगल, सो दिस विल बी 150 cos 30 and this will be 150 sin 30. तो चलो 4 में से एक की विकेट अपन ने उड़ा दी, एक को सीधा कर दिया, वो अपनी लाइन में आ गया बराबर. चलो अब दूसरे को पकड़ो. चलो इसको ले लो. सो वन लाइन पैरेलल टू एक्स, वन लाइन पैरेलल टू वाई बना दिया. उसके बाद डायरेक्शंस, द फोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड अपवर्ड. करेक्ट. Yes, sir. So left side Yes, sir. and upward. This will be the arrows, upside and leftward. Now the angle. Angle here it is given that this angle with respect to x-axis is 45 degrees. तो ये भी कितना हो जाएगा with respect to x? 45. Now if this is angle 45 and this component is adjacent to the angle, so this will be 200 cos 45 and this will be 200 sin 45. So now the 2 wickets are down. Now let us target for the third wicket. Third wicket is this one, 250 Newton wala force. So again, I will make one line parallel to x, one line parallel to y. Now, what can you say about the directions? Both left and downward. Left and downward. It is going towards left and downside. So this component will go towards left side and the vertical component will go towards downside. Now the angle here it is given with respect to y axis it is 30. So here also with respect to y only it will be 30. Now this 30 is adjacent to this component, hence this will be 250 cos 30 and this will be 250 sin 30. Okay, so now to win the match we need only one wicket, that is of 350 Newton force. हाँ बोलो. ये थर्ड क्वाड्रेंट में वाला मतलब अभी जो कर रहे हैं वो नीचे जा रहा है तो माइनस आएगा ना? हाँ, वो माइनस अपन जब fx का इक्वेशन लिखेंगे तब लिखेंगे. You are right. We will consider it as negative only when we write the equations. So now let us target to this 350 Newton. क्या करेंगे? दबा दो ना भाई, उसको भी दबा दो, उसको भी दबा चाहिए ना. हाँ. So one line parallel to x, one line parallel to y. उसके बाद एंगल with respect to y it is given 50. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा with respect to y 50. Now this angle is, this component is adjacent to this angle. So this will be 350 cos 50 and this will be 350 sin 50 and we have won the match.
Okay, so most of the things are done. Now only presentation ceremony is remaining because we have taken all the wickets. So just we will present our things in the solution part. So what I will write, what is the first step? What should I do? Summation of F. Summation of Solution. EF First will be summation of Fx. FX. Add all the forces in x direction. So start with the first force सर of इधर 150 माइनस की साइन Newton. कंसिडर करना है क्या? 150. Yes, करना है, जरूर करना है. वो नहीं करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा. 150 cos 30 ओके, minus सबसे पहले हम 150 लोग cos देखते हैं ये 30. 150 cos 30 वाला फोर्स. सो दिस इज द फोर्स Yes, sir. विच इज इन एक्स डायरेक्शन. 150 cos 30 कहाँ जा रहा है, राइट Positive. साइड या लेफ्ट साइड? Right side. Right. राइट साइड. Right सो इट विल बी side. टेकन एज जा रहा है पॉजिटिव. पॉजिटिव. सो आई विल राइट 150 cos 30. चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले फोर्स पे. नेक्स्ट वाला फोर्स जो एक्स में है वो ये वाला है 200 cos 45. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में या राइट में? Left में. लेफ्ट में. हाँ लेफ्ट में जा रहा है. सो इट विल बी Negative होगा. माइनस Minus Negative. माइनस इट विल बी 200 cos 45. चलो इसका भी काम हो गया. नाउ गो टू द थर्ड फोर्स. थर्ड फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज दिस वन 250 Left में जा रहा है. sin 30. अगर इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, Left so again I will write minus of 250 sin 30. And finally there is one more force here which is going towards the right side, so it will be plus 350 sin 50. किसी को डाउट है इक्वेशन में? No. Okay, so No. one student was asking me about the sign convention. So did you understood how sign convention will come into picture? Yes, sir. Okay, so now can you tell me the answer after solving it? 131.598. 104.75. 131.5. सर 131.59 आ रहा है. ओके हाँ, तो मैं लिख रहा हूँ ना. हाँ लिख रहा हूँ 131.59. करेक्ट. न्यूटन. न्यूटन. हाँ न्यूटन. अब 131 या किसी का 132 भी आ रहा है, किसी का 131.6 भी आ रहा है. आई डोंट केयर, इट्स ओके. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई. क्या बोलना चाह रहा है ये? एड ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन. अब वाई डायरेक्शन में चलो पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ व्हाट आर द थिंग्स इन वाई डायरेक्शन, तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए. सो दिस आर द फोर्सेस इन, दिस इज द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये वाला 150 sin 30. देन दिस इज द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, then this is the force in y direction and this is the force in y direction. ठीक है. So now we will start writing. चलो सबसे पहला क्या लिखूं बताओ? 150 sin 30. 150 sin 30. Correct. And because it is going upward, it has been taken as positive. Second क्या है? 200 sin 45. 200 sin 45. Again it is going upward, so it will be taken as positive. So plus 200 sin 45. चलो नेक्स्ट फोर्स. minus 250. Minus 250 cos 30. करेक्ट. माइनस 250 cos 30. देन लास्ट minus 350 cos 350 50. Minus 50. 350 cos Minus 350 cos 50. correct. Now after solving it, what answer I should get, or what answer you are getting? minus 225. 225.06. Minus 225 point 0.06 आगे न्यूटन. न्यूटन. ठीक है. सो न्यूटन बाबा भी आ गए. चलो सब कुछ हो गया मतलब. सो द लास्ट पार्ट इज नाउ फाइनल आंसर. थर्ड पार्ट, r is equal to square root of. Now I will not write the formula because you know the formula is summation of fx square plus summation of fy square. So it will be 131.59 square plus minus of 225.06 square. So now just calculate and tell me the answer. 260.70. 260.65. 260.70. Okay, 260.70. 70. अब किसी का 260.65 आ रहा है, 260.6 भी आ रहा है, तो I don't mind. Both are, all the answers are correct. Okay, so now we have completed half the part of resultant because we have just found out the magnitude. Last part will be to find out the
direction, that is theta, whose formula is tan inverse of summation fy by summation of fx. Now, before giving me the answer, keep one thing in mind. When you write this formula, theta is equal to tan inverse of fy by fx, don't use negative sign. Directly just substitute what the value is given. So what I will do is fy का आंसर देखो अपना क्या आया है, -225 आया है, but I will not use minus, I will just write positive. So it will be 225.06 divided by 131.59. Okay, so this I will mark a star mark here. It should not be positive, negative. 59.67. 59.67. So answer is degree. 59.67 degree. 9.68. Okay, 59.67 or 59.68, it is okay. Now, what we will do is, for a diagram, we have found out the answer. Now we have to draw the diagram. So for diagram, I will make two axes. So this is x-axis and this is y-axis. Now just see the sign of the forces. fx काय में है हमारा? Positive. Positive. Positive fy में. काय में है? Negative. Negative. x positive, y negative. Which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant. Fourth quadrant. So I will make a resultant in the fourth quadrant. I will write its value, that this is equal to 260.70 Newton, and it is at an angle of how much? Sir, with respect to x, 59.67 degrees. समझ में आया फाइनल सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को sir, कुछ भी with डाउट? respect to x क्यों बना है? क्या हुआ? With respect to x क्यों बना है ये करेक्ट. 59.67? I was thinking कोई तो एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैंने x से ही क्यों लिया. ठीक है, मैंने ये जो एंगल है वो x से ही क्यों लिया. So by default this formula gives you the angle with respect to x axis. ये जो एंगल हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ fy by fx, this is by default giving you the angle with respect to x axis. तो कोई भी एंगल आपको इस फॉर्मूले से निकलेगा तो आपको वो x axis के थ्रू ही मार्क करना है, y के थ्रू नहीं मार्क करना है. गुड क्वेश्चन. Okay, sir.